That is how we are going to write the mononuclear coordination complex formulas. Okay, so starting point that you have to understand is whenever we are going to write a formula, the first thing that you always have to mention is going to be the metal ion. Okay, so what is the first condition or the first rule while writing a molecular formula is going to be first one as central metal एटम, यानी कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम एक ब्रैकेट ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को. ओके, सो सेंट्रल मेटल एटम इज अ वन which has to be listed first. Okay, so central metal atom has to be listed first. This is the first condition. Second thing that what we have to do is after showing what is the central metal atom, अगर नाम दिया गया है तो उस नाम में से फर्स्ट सेंट्रल मेटल एटम को चूज करना है. ओके, सेकंड हम लेंगे लिगैंड्स को. ओके, सो वी नीड टू रिप्रेजेंट लिगैंड्स फॉर्मूला, बट दिस लिगैंड्स हैव टू बी लिस्टेड. कंडीशन है कि दिस पर्टिकुलर लिगैंड्स हैव टू बी लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके, सो third point that you have to understand is if there is a polydentate ligand, polydentate यानी कि एक ही ligand है मगर उसके पास इतने सारे डोनर एटम्स हैं कि वो सेंट्रल मेटल एटम को कनेक्ट कर सकता है दूसरे दूसरे एटम की जरूरत से, मगर वो एक ही ligand रहेगा बड़ा वाला. ओके, जैसे कि हमने ले लिया था एज इथन 1,2 डाइअमाइन, राइट. इस कंडीशन में क्या हो रहा था, यहाँ पे NH2 लिंक करेगा हमारे सेंट्रल मेटल एटम से, फॉलोड बाय CH2 यानी कि इथेन हो गया NH2. ओके, सो दिस इज अ कंडीशन. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेरा नाइट्रोजन एटम्स है वो लिंक करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, राइट. तो फिर इन केस इफ देयर इज अ पॉलीडेंटेड लिगैंड और इस पर्टिकुलर पॉलीडेंटेड लिगैंड में एब्रीवेशन है, अगर हम पॉलीडेंटेड लिगैंड को एब्रीवेशन के साथ में यूज कर रहे हैं यानी कि नाम को शॉर्ट फॉर्म करके यूज कर रहे हैं. ओके, if we are looking at an abbreviation, then the first letter of abbreviation is going to be used for the, what you can say, as determining the position. Okay, for determining the position of the ligand. Okay, remember this point. Done. So fourth point what we have here is going to be the formula of the entire coordination entity, entire thing. Okay, whether it is going to be charged or not, it should be enclosed in a bracket. जैसे हमने बोला था कि first you need to start with a bracket, name the metal, उसके बाद में name the ligand. Okay, उसके बाद में क्या करेंगे हम, name the ligand, and this should be enclosed in a bracket. Remember, like this, first metal and then the ligands. Ligand should be named in an alphabetical order. All right, so now what they say is the formula, the entire formula that we have for the coordination entity. Okay, whether it is going to be charged or not. Okay, it should be, it is enclosed in a square bracket. Okay, it should be enclosed in a square bracket, and therefore these particular square brackets are, that is the ligands which are polydentate. Now remember this, अगर हम ligand को नाम कर रहे हैं, and if in case if the ligand what we are representing in this particular complex formula, if that particular thing is a polyatomic, okay, if it is a polyatomic, then what will happen is their entire formula, their formula should be represented in parentheses.
अभी पैरेंथेसिस यानी कि क्या होगा, पैरेंथेसिस यानी कि सिंपल सा ऐसे जो ब्रैकेट्स आते हैं उसको हम पैरेंथेसिस बोलेंगे। ओके, अभी पॉली एटॉमिक लिगैंड यानी कि कैसा हो जाएगा, NH3 है। ओके, ये पॉली एटॉमिक लिगैंड बन गया आपका। ठीक है, अगर NH3 जो है मेरे पास, ओके, वो 6 है, तो फिर कैसे देंगे हम, पैरेंथेसिस में उसको इन्वॉल्व करेंगे, और ये 6 जो है should come as a subscript, subscript यानी कि जरा सा नीचे आ जाएगा। Okay, so it is representing that ammonia are 6 in that particular molecule or in that particular coordination entity. Okay, second example ऐसा भी हो सकता है CN, cyanides. Okay, polyatomic. Okay, so it's such kind of things done. So let's go with the next one, and that is the rule number 5. There should be no space between whenever we are writing the formula. The fifth rule says that there should be no space. Should be no space between the ligand, that is between the metal and the ligand. Okay, in the formula or coordination sphere. Remember this. Okay, so sixth one. Now, the sixth one says that whenever we have the formula of the charged complexes, okay, and if it is written without a counter ion, then it should be represented. Then the charge should be represented as a right superscript. Remember this. If the formula of a charged complex is represented without any counter ion, okay, then the charge, whatever is there, whether it's positive or whether it is negative, then this particular charge has to be represented on the on the right side as a superscript. Okay, ये सब कुछ जो अभी 6 आपको दिख रहा है, okay, of course there is one more, that is the last one, which is most easiest one. Seventh one, what it says is whatever the charge on the complex is there, it should be entirely neutralized. That is, the charges of cations should be balanced by the charge of anions. Okay. Okay. Now, whatever these 7 rules are there, what you have to do is first you better take a screenshot of this. Okay. So that whenever you are studying, you just need to glance. You don't have to mug these all rules. इसको क्या करेंगे हम, इस particular rules को हम use करेंगे in order to write down the structures or in order to give the what you can say as the formulas. Okay, so let's have some examples so that we can do it much more easy way. Okay, so I want all of you to give a try. I'll give you the names and you need to give me the formula for that. Okay, you can directly type down in the chat section and send it to me. Okay, depending on this only, I'm going to give your attendance for today. Let's see. Okay, so let's go with the first one. Okay, so when we are looking at the first one, I'll try to give you the simplest one so that you can give me the name of that. Okay, so first one, let's start with an example as hexa, amine, hexamine, platinum ले लेंगे, platinum 5 complex. Okay, so this is your first example. Let's see who can give me the name. Okay, I'm going to wait for next 30 seconds so that you can give me the name first.
Okay, anyone who can give me the name fast? Adil, Afreen, Aishwarya, Arslan, Ekta, Lakshmi, Mohammed, Mumtazan, Nishan, Rudaya, Sana, Zinabi. Okay, so here is the name. I've waited for quite a long time. So the name for this is going to be as, sorry, the complex formula for this particular thing is going to be as, first use a bracket as what they say. Okay, it should be placed into the bracket. So first we are going to name the center metal atom. Center metal atom here is the platinum. Okay, so Pt, platinum. So platinum, and then what we have is an hexaamine, so NH3. Okay, so NH3. So how many of them are there? We have six. Actually, the six should come as a subscript. Remember this. And we need to close this. Okay, the thing is, platinum is in the charge of +4. Remember, ammonia, what we have here, amines are neutral ligands. So therefore, the entire charge on this complex will be as +4. Okay, very nice, Zinabi. It is +4, correct. And this particular +4 should come as a superscript, remember. Okay, nice try, Zinabi. Good one. So now this was the first one. Let's try one more. Okay, so one more that I'm going to take over here is a bit, let's see, as tetra, tetra, amine, dichlorido, dichlorido, chromium, dichlorido, chromium, 3 iron. ओके, सो लेट्स सी, आयन यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ ही जाएगा, ठीक है, तो फिर देख लेंगे अब, चलो लेट्स गिव अ ट्राई. So first one what we have is the central metal atom. Central metal atom यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्रोमियम. ओके, तो फिर क्रोमियम Cr डन. तो फिर अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के, we have two types of ligands. One is chlorine and one is amine. कैसा रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में. अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स यानी कि क्या हो जाएगा, फर्स्ट अमाइन आ जाएगा, बाद में क्रोमियम आ जाएगा, सॉरी क्लोरीन आ जाएगा, राइट. तो फिर फर्स्ट NH3 डन. सो हाउ मेनी NH3, टेट्रा, टेट्रा यानी कि 4. ओके, Cl कितने हैं मेरे पास, डाइक्लोरो, राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू show this. So plus, okay, now chromium. Now observe, chromium what they have said is in a +3 state. +3 state और क्लोरीन जो है -1 स्टेट में रहेगा, राइट. अमोनिया न्यूट्रल है, तो फिर जस्ट फॉरगेट अबाउट अमोनिया राइट नाउ. सो देयर आर टू क्लोरिन्स, -1 into 2 यानी कि -2 हो जाएगा. क्रोमियम है +3 स्टेट में, -2 +3 यानी कि +1 का कंडीशन आ जाएगा. ऑफ कोर्स दिस +1 व्हाट वी हैव, it should be written as a superscript. Remember this, it has to be written as a superscript. So this is how it goes. So one more, shall we try one more? We shall take a counter ion this time. Okay, so we'll take a counter ion. Let's see how far you can do it. Now this one is not going to be that easy. Okay, so you need to give a try. So potassium, let's use potassium trioxalato, trioxalato chromate. आपको समझना चाहिए कि अभी oxalato, a ligand ending with a term as O, of course it's going to be a negative. And if your metal is ending with something like an ATE, then the entire complex is actually is a negative one, which is going to be balanced because of the counter ion. Counter ion यहाँ पर potassium है. Okay, तो फिर chromate 3 complex. Okay, तो फिर इसको कैसे देंगे? I'm giving you 30 seconds in order to do it now. Let's see.
Yes, I'm counting on you people. Let's see how far you can do it. Yes, anyone who has completed it? Zinabi, Sana, Sakinath. Okay, Sakinath has given me the answer. Sakinath, it's a potassium बाबा. So फिर क्या हो जाएगा? First हम potassium को दे देंगे, ठीक है? Good try. First we will give it for the potassium. Okay. So potassium कैसे देंगे हम? क्योंकि वो पूरा काउंटर आयन है. Okay. तो फिर potassium रहेगा बाहर. Done. So K3. अभी K3 क्यों आ रहा है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? पहले खत्म करेंगे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स को, ठीक है? तो फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा कि वो जो 3 है वो सबस्क्रिप्ट आना चाहिए पहली बात. ओके, तो फिर अब शुरू करेंगे. ट्राई ऑक्सैलेटो और क्रोमेट है, क्रोमेट Cr, क्रोमेट. ओके, तो फिर फर्स्ट थिंग Cr होने के बाद जो क्रोमेट है, ओके Cr. नाउ वी विल गिव ऑक्सैलेटो. ऑक्सैलेटो पे क्या हो जाएगा? C2O4. ओके, ना ऑक्सैलेटो जो है वो 3 है हमारे पास. नाउ सी ऑक्सैलेटो व्हाट वी हैव is in -3 condition. Remember this, it is in a -3 condition. तो फिर ऑक्सैलेटो जो है हमारे पास C2O4 जो है -2. ओके, सो -2 इंटू कितने हैं हमारे पास? वो है 3, यानी कि बन जाएगा कुल मिला के -6. राइट नाउ क्रोमियम व्हाट वी हैव Cr इज प्रेजेंट इन +3 स्टेट. ओके, तो फिर हमारे पास जो है क्रोमियम वो है +3 स्टेट में. नाउ when it is in +3 state, what will happen is that the complete answer or the complete charge is going to be as we are going to get here as a -3. यानी कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्स यानी कि किस कौन सा कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर देख रहे हैं? यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला देखो, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इतना ही पोटेशियम को छोड़ के जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज एज -3. रिमेंबर दिस, इट इज गोइंग टू हैव अ चार्ज ऑफ -3 ऑन दैट. सो -3 को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे हम? वी आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज दैट यूजिंग वन थिंग एंड दैट इज योर पोटेशियम. ओके, विल यूज अ पोटेशियम एंड देन वी कैन कॉम्पनसेट दिस पर्टिकुलर -3 चार्ज. तो फिर पोटेशियम के ऊपर इट इज अ मेटल. ओके, पोटेशियम इज अ मेटल. सो पोटेशियम +1. कितने हैं हमारे पास पोटेशियम यहाँ पे फिलहाल में? वो है 3, यानी कि 3 +3 -3, यानी कि एंटायर सिस्टम अभी न्यूट्रलाइज हो गया. ठीक है, तो ऐसे समझना चाहिए इसको. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द एंटायर लिस्ट, प्लीज ऑब्जर्व. ओके, सो द रूल्स, फर्स्ट रूल क्या बोले थे हमने? द सेंट्रल मेटल एटम शुड बी लिस्टेड फर्स्ट. सेकेंड वन, द ligands are then listed in an alphabetical order. ओके, चार्ज पर डिपेंड नहीं होगा. -2 है, -3 है, -1 है, चार्ज उसके ऊपर डिपेंड नहीं होने वाला. थर्ड वन, अगर पॉलीडेंटेड लिगैंड है तो फिर पॉलीडेंटेड लिगैंड जो है हमारा, अगर वो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिया गया है तो फर्स्ट लेटर एब्रीवेशन का उसको हम यूज करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन. ओके, the formula of the coordination entity, whether it is charged or not, should be enclosed in a square bracket. Okay, when the ligands are polyatomic, their formula should be enclosed in parentheses. Parentheses यानी कि क्या है मैंने बता दिया आपको. Okay, brackets रहेंगे. So ligands abbreviations are also enclosed in the parentheses. There should be no space between your ligands and metal. Remember this point. Okay, जब भी हम एक formula लिखते हैं तब उसके बीच में space नहीं रहना चाहिए. When the formula of a charged coordination entity is written without that of the counter ion,
the charge is indicated outside the bracket as a right superscript. ऊपर की ओर, right side ऊपर की ओर हम उसको charge दे देंगे. Okay. For examples, we have already represented 1, 2 examples. So here you can observe that. Okay, I'm giving you 5 seconds over here in order to take this screenshot first. Please observe. You have 3 rules here. Please take the screenshot here, because these screenshots will help you to study and you can have those all while you are going to name the complexes, or where you are going to write down the formula for the complexes. These are going to help you. Okay, so now take down this screenshot also. Done. So now we will go further. Now after this, नेमिंग तो हमने कल कर भी दिया है, उसके रूल्स जो थे हमने कल कर दिया है रूल्स के बारे में. Okay, we have already studied these yesterday. So now what shall we do is we will go to the most important 3-mark subdivision question. Okay, and that is called as the Werner's postulate. Remember this name, what it is called as is the Werner's postulate. So I'll write down the name here as Werner. I'll just Okay, it's a Werner's postulate, one of the most important postulates, and that you can expect in examination for around the 3-mark subdivision questions. Okay, so it's quite simple. First, I will explain the things to you, and then we will write it down in terms of points. Okay, so what it says is whenever we have a coordination complex, okay, what the coordination complex is going to have? Of course, it is going to have a center metal atom, and this center metal atom, of course, is going to be connected to, you can say, as your ligands, correct? These are going to be connected to the ligands. Okay, so let's say these are the ligands which you are going to now attach. Okay, so फिर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, and I will take the 4th one here. Okay, so what he says is whenever we have a complex in which the center metal atom is connected to the ligands, this connection what we have now, this connection is going to be made up of 2 different types. Okay, remember this. This connection what we have is going to be made up of 2 different linkages या फिर 2 different valencies. तो फिर ये जो valencies आपको जो दिख रहा है उसको 2 भाग में बांटा जाएगा. First one, what he calls them as is primary valency, and the second one, what he calls them as is the secondary valency. Okay, you can either call it as a valency or you can either call it as a linkage, not a problem. Okay, so what he says is the center metal atom is connected to the ligands or the atoms by the help of 2 types of linkages or valencies. First one का नाम है primary and second one is called as the secondary. अभी प्राइमरी वैलेंसीज क्या है, सेकेंडरी वैलेंसीज क्या है, उसके बारे में हम देख लेंगे. ओके, सो प्राइमरी वैलेंसीज यूजुअली, ओके, क्या हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसीज यूजुअली क्या हो जाएगा कि जब हम इसको पानी में डाल देंगे या फिर एक सॉल्वेंट में डाल देंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो प्राइमरी वैलेंसीज जो है, ये प्राइमरी वैलेंसीज ये डिसोसिएट हो जाएगा. तो फर्स्ट कंडीशन प्राइमरी वैलेंसीज का क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, इट इज आयोनाइजेबल. ओके, फर्स्ट कंडीशन इज इट इज गोइंग टू बी आयोनाइजेबल, यानी कि जब व्हेन वी पुट दैट इनटू वाटर इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन. ओके, दैट पर्टिकुलर बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रोकन आउट. ओके, अभी कौन सा जो लिगैंड है जो प्राइमरी वैलेंसीज को फॉर्म करेगा वो इंपॉर्टेंट है. यूजुअली ओनली नेगेटिव, ओके, only negative ions will form the primary valency या फिर आपका linkage. Okay, primary valency या फिर linkage. Okay, now
Coming towards the second one, which we call it as a secondary linkages या फिर secondary valency. So when we speak about a secondary valency, remember this secondary valency what we have. Okay, so these secondary valencies what we have here, these secondary valencies are non-ionizable, यानी कि जब हम उसको पानी में डालेंगे, okay, remember this point, when we put this particular thing that is a secondary valency, okay, whenever we put this into a solvent, this particular complex containing a secondary valencies, these linkages are non-ionizable. Okay, so what is going to happen is these particular linkages are non-ionizable, यानी कि वो cut नहीं होगा, वो dissociate नहीं होगा. These particular bonds or valencies are satisfied with the two different types of ions or molecules, यानी कि neutral molecules and negative molecules will form secondary linkages. Important point of secondary linkage, what you have to remember is going to be, always remember secondary valency is equal to the coordination number is equal to the coordination number of the central metal atom. Okay, remember this point. Now, next is going to be the most important things. समझ लीजिए कि यहाँ पे जो अब मैं हाईलाइट करने वाला हूँ वो सेक्शन जो है वो आपके secondary linkages में है. Okay, so let's highlight these. Let's say this one is secondary, this one is secondary, and this one is also secondary. Okay, let us say for a moment. Okay, so what will happen is these linkages, these particular ligands which are held by the secondary linkages are responsible for giving a shape to the molecule. Okay, remember this. This is the most important point. That is, all these particular groups or the ions which are held or bonded by the secondary linkages to the metal have a characteristic spatial arrangement. I'm saying over here spatial, not special. Spatial. Please observe SPATIAL, स्पेशियल, यानी कि क्या हो जाएगा कि स्पेस में अरेंजमेंट. ओके, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स इन स्पेस. ओके, थ्री डायमेंशनल स्पेसेस are called as spatial. SPATIAL, spatial arrangement, यानी कि these are responsible for giving rise to the spatial arrangement of the atoms. Remember this. Okay, so this is how the entire things govern here. Okay, so is there any problem anyone has? Quite simple theory. So Warelet's postulate says that whenever there is a ligand, ligand is going to be attached to the central metal atom by the help of two different types of valencies. फर्स्ट वैलेंसी को हम बोलेंगे एज प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंड वैलेंसी को हम बोलेंगे एज द सेकेंडरी वैलेंसी, राइट? So first one was a primary valency and the second one what we have is a secondary valency. So what are the primary valencies? Primary valencies are those particular bonds which are usually ionizable and these are satisfied by the negative ions. Okay, yani ki negative ligands. Secondary valencies are those particular valencies which are going to be governed or which are going to be attached by the help of the neutral molecules या फिर negative molecules. And usually the secondary valency is equal to the coordination number of central metal atom. All those particular ligands which are held by a secondary ligand are responsible for giving rise to the spatial arrangement, यानी कि a three-dimensional arrangement to this particular molecule. So this is how it goes. Done? Okay, so let's observe all the points. The first one. In coordination compounds, metals have a tendency to show two different types of valencies or linkages. These are called as primary and secondary. The primary valencies are usually
ionizable and are satisfied by negative ions. The secondary valencies are non-ionizable. यहाँ पर क्या हो रहा है? It's non-ionizable. यानी कि solvent में डालने के बाद ये particular bond cut नहीं होगा. These are satisfied by the neutral or negative ions. The secondary valencies are equal to coordination number and it is going to be fixed for a metal. Okay, ions or groups bonded by the secondary linkages are going to have a characteristic spatial arrangement corresponding to the different coordination intervals. Now, please take a snapshot or a screenshot of this particular thing. Okay, this is going to be the most important for you people for your 3-mark subdivision in your examination. So, this is important. Take down. So I hope everyone has taken a screenshot of that. Now I'm going to ask, like I'm going to give you a bit of freedom. If you have any problem so far, you can ask me. Or if you want again, like to solve some of the examples, depending upon how to write down the complex or how to write down the name of the complex, we can also do that, not a problem. Because the next section is going to be the isomerism, which is going to take lots of time. Okay, so next section is going to be the isomerism. Okay, so this is going to take some time. So what shall we do is we'll keep the isomerism for tomorrow. But before going further, what shall we do is we are going to see that we are going to solve some of the examples. So I want you people to name, or let's convert a particular formula into the names of those complexes. Okay, so I'm going to give you the first one. The first complex wherein you have to name it. Okay, that is going to be CO NH3 5 times Cl, close the bracket, and plus 2 is going to be the charge, which I have actually should be as a superscript actually. So anyone who can name this particular thing, give yourself a try. Come on. Yes, anyone? Okay, Zinabi, yes, we'll solve some problems today. Not a problem. Okay. Anyone who can name it? Sakinat, Zinabi, Sana, anyone? Okay. Now, I'll give you the name of this. So, how shall we name it? Yes. Zinabi has said like chlorine pentacobalt. Okay, okay, okay. See, Zinabi, first thing that is we have ammonia here, right? Amine. A से शुरू होगा तो फिर उसके हिसाब से आपको सोचना चाहिए. Only you have to take into consideration of the name of ligand, not like 5 है यानी कि पेंटा हो गया तो फिर P आएगा पहले, नहीं वैसा नहीं है. ओके, वो क्लोरीन वो पेंटा बाद में जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा. फर्स्ट व्हाट आर द लिगेंड्स? एक है अमाइन और एक है क्लोरीन. ए फर्स्ट आना चाहिए. फिलहाल अमाइन कितने हैं? 5 है, पेंटा अमाइन हो जाएगा. ओके, so first one what we have to know is we are going to name this particular thing as
Pentaamine. Okay, let's name this particular thing over here as pentaamine. Okay, so pentaamine बाद में क्या है, क्लोरीन है हमारे पास, करेक्ट, बट क्लोरीन इज अ नेगेटिव वन, सो इट विल बिकम एज क्लोरीडो बिकॉज इट इज अ नेगेटिव लिगैंड. ओके, कोबाल्ट. अभी देखो यहाँ पे कोबाल्ट आना चाहिए या फिर क्लोरीड सॉरी कोबाल्टेट आना चाहिए. +2 चार्ज है, अगर +2 आ रहा है तो फिर मेटल को हम वैसे ही रखेंगे. ठीक है, तो फिर कोबाल्ट. ओके, कोबाल्ट. नाउ कोबाल्ट यूजुअली इज इन द प्लस, yes, it is going to be in a +3 state, remember this. अभी +3 है मगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, क्लोरीन एक है. ओके, क्लोरीन का चार्ज क्या हो जाएगा, -1. तो फिर -1 और कोबाल्ट का चार्ज क्या है, +3. -1 और +3 कितना हो जाएगा, +2. इसीलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 का चार्ज है. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद इट. सो नेक्स्ट वन, यस साकिनाथ, करेक्ट. So we'll go with the next one here. So I'll give you one more, quite a simple one. Okay, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स का हो गया. जरा सा एक सिंपल वन दे देंगे मगर आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में. ठीक है, K2 पोटेशियम का है. ओके, काउंटर आयन है पोटेशियम यहाँ पे. सो K2 PD यानी कि पैलेडियम, रिमेंबर दिस, Cl4. ओके, अब आपको एक हिंट दे दूंगा मैं. पैलेडियम जो है वो +2 स्टेट में रहेगा. इतना सा हिंट मैंने दे दिया आपको. अब इसका नाम क्या देंगे, सोच लो बेटे. पहले काउंटर आयन, फर्स्ट आपके लेफ्ट साइड में जो काउंटर आयन है उसको हम नाम देंगे. ओके, तो फिर अभी यहाँ पर डाई पोटेशियम नहीं होगा, सिर्फ पोटेशियम करके हो जाएगा. ठीक है, तो फिर फर्स्ट पोटेशियम, then go into the complex as chlorine and then palladium. मगर हम आपको मैंने ऑलरेडी एक हिंट दे दिया है, पैलेडियम जो है वो रहेगा +2 स्टेट में. ओके सकीना, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो, वन सेकेंड, yeah, potassium tetrachlorido, baba, first it should come as chlorido. Okay, प्लैटिनेट, बाबा प्लैटिनेट नहीं है, ये पैलेडियम है. प्लैटिनेट जो है पीटी बन जाएगा, राइट. तो फिर इसको जो नाम है रहेगा, वेरी गुड, बट यू हैव ट्राइड वेरी वेल, ऑलमोस्ट करेक्ट. ओके, सो फिर इसका नाम बन जाएगा एज पोटेशियम, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो. ओके, इट बिकम्स एज टेट्राक्लोरिडो क्योंकि क्लोरीन जो है नेगेटिव लिगैंड है. ओके, अभी देखो प्लैटिनम के ऊपर मैंने आपको एक हिंट दे दिया था कि +2 का चार्ज है, राइट. क्लोरीन जो है -1 का चार्ज रहेगा. ओके, तो फिर यहाँ पर +2 -4 यानी कि -2 का चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर आना चाहिए. जो -2 चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएगा, आई विल हेल्प यू सी. पैलेडियम है. ओके, पैलेडियम का चार्ज जो था वो था +2. ओके, क्लोरीन जो था वो है -1 इंटू हमारे पास है 4, तो फिर ये बन जाएगा एज -4, राइट. तो फिर पैलेडियम का जो कॉम्प्लेक्स, सिर्फ पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स, हम पोटेशियम को कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है पैलेडियम Cl4, इसके ऊपर आ जाएगा एज -2 चार्ज. ओके, अब ये इस -2 को कंपेंसेट करने के लिए आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे पोटेशियम आ रहा है. ओके, कितने पोटेशियम आ रहे थे, 2 पोटेशियम. तो फिर ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम बन जाएगा हमारा एज काउंटर आयन, रिमेंबर दिस. ओके, तो फिर ये बन गया हमारा काउंटर आयन. ओके, तो फिर पैलेडियम जो है एक्चुअली नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है, राइट.
तो फिर ये इसको पैलेडियम को पैलेडियम करके नहीं रख सकता मैं, यहाँ पर पैलेडियम को हम रखेंगे एज इस पैलेडियम को हम रखेंगे यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ पैलाडिट। पैलाडिट 2। ओके, तो फिर ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स का नाम। तो समझ में आ गया सबको? ओके, और एक एग्जांपल लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो मैं अभी नाम लेने वाला हूँ, ओके, क्या करेंगे हम उसको जो है we will take into consideration of the usually asked question in exam, but it is going to be a little bit difficult for you. Let's see. Just a minute, please. I am trying to figure out one particular thing. It has a polydentate ligand. So we'll take one polydentate ligand here into consideration. Yes. So we have this one, chromium complex, along with NH3 2 times. Okay, and Cl 2 times. Cl 2 times, and final one is this one. This is what I was waiting for, and Cl. Yes. Now let's see how far you can tackle this. So what we are going to name first is going to be amine. Okay, first amine को नाम करेंगे, बाद में chlorine, बाद में we will name the ethyl diamine.